Good evening. Welcome to Left, Right and Centre. I'm Vishnu Shom. On the show tonight, two debates. Under fire for attending a Buddhist conversion ceremony, the Aam Aadmi Party Cabinet Minister Rajendra Pal Gautam resigns. He joins us on the show in the next few minutes. Ahead of the Gujarat polls, is the Aam Aadmi Party dependent on the politics of competitive Hinduism, is what we're asking. Have they frowned upon him, which is why he's quit, because he attended what the BJP, in fact, ends up calling a communally divisive conversion movement. Also on the show tonight, it's the Sena versus Sena over their party symbol and name, both of which have been suspended by the Election Commission. Will the battle for the legacy of Balasaheb Thackeray be defined by the name and symbol picked by either side? But first, the Delhi Social Welfare Minister Rajendra Pal Gautam resigned today following vigorous protests by the BJP over his presence at a religious conversion event in Delhi on Friday. This at a time when the BJP has slammed his participation at this meet, calling it communally divisive. Therefore, by accepting Mr. Gautam's resignation, is the Aam Aadmi Party playing competitive Hindutva ahead of the Gujarat elections? Mr. Rajendra Pal Gautam, the Aam Aadmi Party minister who's resigned, is with us. Thanks, sir, very much for being with us. Gautam ji, क्या आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है या आप अपने मर्जी से इस्तीफा दे चुके हैं? नहीं, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, क्योंकि मैं इस बात से आहत हूं कि आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्याएं की जा रही हैं। मूछ रखने पे हमारे भाइयों का कत्ल हो रहा है, घड़े छूने पे हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मैं इससे आहत हूं। और ऊपर से देखने में यह आ रहा है कि किसी बहन के साथ बलात्कार करके और हत्या करके जिनको सजा हुई है उनको छोड़ दिया जा रहा है और उनको माला पहना के मिठाई खिलाई जा रही है और उसके ऊपर कोई भी नहीं बोलता। हम किस तरफ, भारत को हम किस तरफ ले जा रहे हैं? नहीं, पर गौतम जी आप ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस गए थे और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इससे काफी नाखुश थे। क्या आप अरविंद केजरीवाल से निराश हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को तो उस कार्यक्रम के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक प्रोग्राम और धार्मिक प्रोग्राम है जिसको मिशन जय भीम और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मिलकर आयोजित किया। और ये प्रोग्राम 14 अक्टूबर 1956 से, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी अपने लाखों अनुयायियों के साथ, वहीं पर ये 22 प्रतिज्ञाएं भी उन्होंने समाज को दी थी। तब से हर साल पूरे देश के हजारों जगह पर, केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी हजारों जगह पर अशोक विजय दशमी के अवसर पर यह आयोजन होता है। नहीं, पर जिसमें हजारों जगह पर करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। आप जवाब दीजिए, अरविंद केजरीवाल इससे निराश थे या नहीं? नहीं, मेरी तो बात भी नहीं हुई उनसे, पर पार्टी नाखुश वाली कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। और फिर उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिया और मुझे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के युवाओं के लिए उनके जुडिशरी की कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल की कोचिंग, तमाम तरह के कंप्यूटर एग्जाम्स की कोचिंग फ्री में सरकारी खर्चे में देने का इतना अच्छा स्कीम बनाने का मुझे मौका दिया। सीवर में सफाई में उतरने से लोगों की जो जान जाती थी उसको रोककर उनको मशीनों का मालिक बनाने का मुझे मौका दिया। इतनी अच्छी योजनाएं बनाने का मौका दिया है, तो मैं तो समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल आज देश की उम्मीद हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को वो लोग अपनी खुद छापती है। गौतम जी, आप कम से कम ये मानेंगे कि गुजरात चुनाव के पहले आपके ये आप इस दिवस पे जो गए थे, इसमें पार्टी के लिए ये काफी झटका है? नहीं, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी के लिए कोई झटका नहीं है। ये तो 1956 से लगातार धम्म दीक्षा होती आई है और वहां 22 प्रतिज्ञाएं होती आई है। आज ये लखनऊ का आप वीडियो देखिए, लखनऊ में हजारों लोगों ने दीक्षा ली है, वहां पे भी 22 प्रतिज्ञाएं हुई हैं। आप पूरे देश के सारे राज्यों में हो रही है। उसका किसी राजनीति से मतलब नहीं है, उसका धम्म से मतलब है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञा, करुणाशील पर आधारित जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग। पूरे दुनिया में बुद्ध धम्म बढ़ा है, पूरी दुनिया उसको मान रही है, जो कि बुद्ध के धम्म में ही कल्याण है, शांति और मानवता का संदेश है। उससे किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए? पर गौतम जी, गुजरात चुनाव के पहले क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कंपेटिटिव हिंदुत्व में फंस चुकी है? नहीं, आम आदमी पार्टी गुजरात में जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो इतने लंबे समय से
लोगों में डर पैदा करके सत्ता कब्जाए हुए हैं, उनका आधार खिसक रहा है, जन आधार। लोग हमारी पार्टी को आशा की उम्मीद की किरण से देख रहे हैं। नहीं गौतम जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी को कहना था कि ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस जहां आप गए थे ये एंटी हिंदू है, और आप अटेंड किए थे, उसके कुछ ही दिनों बाद आपने अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को कहना है ये एंटी हिंदू इसलिए है क्योंकि वहां 3 वचन थे, आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वरा, आई शैल हैव नो फेथ इन रामा एंड कृष्णा, I shall have no faith in गौरी एंड गणपति। अर्थात उनको कहना है कि ये वचन जब था वहां और ये एंटी हिंदू है और ये गलत है, और अब आप इस्तीफा दे चुके हैं अपने पार्टी से गुजरात चुनाव के पहले। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। सही बताएं तो ये मानवतावादी 22 प्रतिज्ञाएं, जिसमें सबको एक मानव के तौर पे सबका मान सम्मान करना और हर मानव कल्याण के का हक और अधिकार की इज्जत करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी प्रकार का नशा ना करना, इंसान को बराबर दृष्टि से देखना, ये टोटल 22 प्रतिज्ञाएं। आप उनको 22 को टोटल पढ़िए। जब आप इन टोटल पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार के मोदी जी के केंद्रीय मंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेज के अंदर वॉल्यूम 17 के अंदर छपवाया। इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को इसी भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने छपवाया, और इसी सरकार ने नागपुर में दीक्षा भूमि में एक शिलापट पर ये 22 प्रतिज्ञा लिखकर वहां छपवाई है। वहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस शामिल हुए हैं, और इस बार वहां पर 2 केंद्रीय मंत्री उस दीक्षा समारोह में शामिल हुए जहां 22 प्रतिज्ञा ली गई है, जिसमें गडकरी जी भी शामिल हुए हैं और उसके अंदर जो है रामदास अठावले जी भी शामिल हुए हैं। एक अंतिम सवाल, ये तो केवल एक धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए ये सब एक बात बना रहे हैं। All right, Gautam ji, thank you very much for speaking to us, explaining what really happened there, but I'm not sure you really answered the question. But perhaps we'll get a little bit more clarity. Ashutosh joins us, as also Jai Prakash, the senior BJP leader in Delhi. Thank you both very much for being with us. Ashutosh, do you accept what Rajendra Pal Gautam is doing? He's distancing his decision to resign from the party with the circumstances of him attending it. Do you accept that it's not related? Because some would suggest the Aam Aadmi Party has been pursuing a soft Hindutva agenda for a while, and it's uncomfortable that he's gone and attended this at a time of the Gujarat elections. Vishnu, I personally know Rajendra Pal Gautam, and I think he's one of the nicest person in the Aam Aadmi Party, and he's a very committed Dalit activist. He's a very committed Ambedkarite, and I think the Aam Aadmi Party should be proud of him, but unfortunately today he's a victim of the whole communal politics. I know, being a party member, being a disciplined soldier of the party, he will not, you don't expect him to say what you want him to say or what the whole world knows. Obviously he has been asked to resign, and he has been asked to resign for the simple reason because today Arvind Kejriwal is scared that this, if BJP extend this campaign in Gujarat, that Aam Aadmi Party is an anti-Hindu party, then obviously he's thinking that he will lose. But unfortunately, the same Arvind Kejriwal, he believes in Baba Saheb Ambedkar and Bhagat Singh both, and you can see Baba Saheb Ambedkar's picture on his walls. But has he read Baba Saheb Ambedkar? Has he ever tried to read this book which is called Annihilation of Caste? Yes. If you read Annihilation of Caste, where the para number 23.6, what Baba Saheb Ambedkar has written, it's something which is Arvind Kejriwal should know, and his party should know that. No, I'm sure Arvind Kejriwal would know this, and I think it's being done deliberately. I think it's uncomfortable for the Aam Aadmi Party. That's the bottom line. This doesn't have very much to do with Buddhism or the philosophies of Ambedkar as it does with very hardcore politics ahead of the Gujarat election. Then Vishnu, then Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party should not embrace Baba Saheb Ambedkar. Okay. What is written in 23.6? I have therefore no hesitation in saying that such a religion must be destroyed. Okay. This is what Baba Saheb Ambedkar has said, and what Rajendra Pal Gautam has said in that Diksha Samaroh
Baba Sahib Ambedkar has said in 1956, when he with lakhs of the followers, he converted from Hinduism to Buddhism. No, I know the context. I know the context, and it's not meant to be anti-Hindu in that sense at all. In fact, let me go across to Jayaprakash ji. Jayaprakash ji, ये कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं हो रहा था वहां इस दिवस पे, ये एकदम वॉलंटरी दिवस था, वॉलंटरी कन्वर्जन हो रहा था, तो बीजेपी को इसको एंटी मतलब एक कम्युनली डिवाइसिव, इसको कम्युनली डिवाइसिव आप लोग क्यों मानते हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र गौतम जी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होकर के वो कहते हैं राम कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, गणपति की पूजा नहीं करनी है, पार्वती महादेव की पूजा नहीं करनी है। ये कौन सा धर्म ने सिखाया है भाई? एक तरफ तो आप जिस राज्य के मंत्री हो वहां सामाजिक न्याय की बात करते हो और दूसरी जगह जाकर आप असामाजिक बातें करते हो। आपको किसी को भी दीक्षा दिलानी है तो आप दूसरे धर्म की बात क्यों करोगे? मैं राजेंद्र गौतम जी से पूछना चाहता हूं कि आप उसके अंदर और धर्मों का भी नाम लेते, हिंदू धर्म का ही आपने क्यों नाम लिया? बाकी तो देश के अंदर और भी तो गॉड है, और भी तो भगवान है, अन्य भी तो और धर्म है, आप उनका भी नाम लेते हैं कि आप उनके भी पूजा नहीं करना, उनके धर्मस्थल पर मत जाना। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली और देश के अंदर एक तरह से प्रोपेगेंडा कर रही है। वो एक तरफ कट्टर हिंदू भी दिखाना चाहते हैं और एंटी हिंदू भी का एक्टिविटी करते हैं। वो देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार भी हैं, जबकि सबसे वो कट्टर बेईमान है। जिस ईश्वर की शपथ लेकर के राजेंद्र गौतम जी ने दिल्ली के अंदर विधायक की शपथ ली, मंत्री की शपथ ली, उसी संविधान की उन्होंने अवहेलना की। और आप तो आप कहते हो कि his utterances were anti-Hindu. That is what Jayaprakash ji is saying. नहीं, मुझे लगता है जयप्रकाश जी को इस बारे में जानकारी नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था और बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। तो संविधान का अर्थ ये नहीं है कि एक धर्म, संविधान का अर्थ है सभी धर्म। आप दीक्षा दिलाने के पीछे आप एंटी हिंदू बात नहीं कर सकते। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, आप मुझे प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर जयप्रकाश जी के आप भी तो बोल रहे थे और भीमराव अंबेडकर जी के लिए जयप्रकाश जी एक सेकंड, जयप्रकाश जी एक सेकंड, आशुतोष को बोलने दीजिए। 5 तीर्थ बना करके अंबेडकर जी को स्थापित किया है। एक सेकंड जयप्रकाश जी, एक सेकंड जयप्रकाश जी, स्थलों को निर्माण मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप 1 मिनट रुक जाइए। हम एक सेकंड जयप्रकाश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ये ढकोसलापन है कि एक तरफ वो बाबा साहब अंबेडकर को गले लगाने की बात करते हैं और बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात 1956 में की थी, ये जयप्रकाश जी को पूछना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। और जब बौद्ध धर्म अपनाया तो ये जो बात राजेंद्र पाल गौतम ने दीक्षा समारोह में कही थी, एग्जैक्टली वही बात बाबा साहब अंबेडकर ने कही। और 1956 के बाद से जब भी हिंदुस्तान में दलित इकट्ठा होते हैं उस दिन, तो वे इसी शपथ को, इसी संकल्प को दोहराते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दलितों को गले लगाने की बात करती है और अंबेडकर साहब को गले लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ राजेंद्र पाल जैसे, गौतम जैसे एक निहायत ही बेहतरीन दलित नेता का अपमान करने की बात करती है। ये सवाल मंत्री का नहीं है, ये सवाल राजेंद्र पाल के दलित होने का सवाल है। और आप भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश जी बताइए। देखिए, राजेंद्र गौतम जी अब इस समय आम आदमी पार्टी और उनके सपोर्टर क्या कर रहे हैं? वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। अरे भाई, आप दलित कार्ड भी खेलना चाहते हो, एंटी हिंदू बात भी करोगे, आप संविधान की शपथ भी लोगे, संविधान के खिलाफ बात भी करोगे। आपने उन्हीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दलित कार्ड की स्थापना की, दलित कार्ड के लिए वो ये कर रहे थे कि ये एंटी हिंदू है, ये आप बताइए। Make up your mind. Is he नहीं आप playing the Dalit card or is he anti-Hindu? Because if it is the Dalit card that he is doing, it's not as if the BJP is not राजेंद्र गौतम जी ने सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर हिंदू विरोधी बातें करी कि नहीं करी? राम लक्ष्मण का नाम क्यों लिया? कृष्ण भगवान का नाम क्यों लिया? महादेव जी का नाम क्यों लिया? आप बताओ, बौद्ध धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म का आपको नाम लेना है? बताओ, कहीं भी अगर लिखा होता है। आशुतोष, would you agree at least? हमारे देश के अंदर हमारे देश में सभी धर्मों का स्वागत है। जयप्रकाश जी, हिंदू धर्म के खिलाफ। Would you not accept, Ashutosh, that the Aam Aadmi Party is in trouble
in Gujarat if this gets out of hand? This आप particular reason. The reasons may be disingenuous, but politically it's very sensitive. पार्टी के नेता हैं, उन्हें पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर हिंदू विरोधी थे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ये शपथ ली थी, क्या वो हिंदू विरोधी थे, पहले यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, उनको यह समझना चाहिए कि भारत के संविधान के हिसाब से बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। जो 10 अवतार की बात की जाती है उसमें बुद्ध भी एक अवतार है। तो आप बौद्ध धर्म में अगर कोई बात हो रही तो एंटी हिंदू कैसे हो गई? अरे भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लिया करिए आप लोग। आप अगर बौद्ध धर्म को, बाबा महात्मा बुद्ध को आप 10 अवतार के अंदर मानते हैं, उनको बौद्ध हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं, तो वहां कही गई बात वो एंटी हिंदू कैसे हो गई? और अगर राजेंद्र पाल गौतम अगर एंटी हिंदू बातें कर रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर भी एंटी हिंदू हो गए। और बाबा साहब अंबेडकर ने तो पूरी किताब लिखी हुई है जहां पे वो कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है और क्यों हिंदू धर्म। उन्होंने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो अगर तो बाबा साहब अंबेडकर तो एंटी हिंदू हो गए ना, तो ये बात आप कहिए ना। हिम्मत all right, look, one way or the other, the larger question remains unanswered. How is this going to play out? Ashutosh, one sec, I'm out of time on this debate. I need to move on. I'd like to thank you both for joining us. But I think the larger question on how this is going to play out on the election turf in Gujarat, that remains unanswered. It seems to be a very sensitive issue indeed, not just for the BJP for political reasons, but evidently for the Aam Aadmi Party and its leadership as well. Next on the show, it's the Sena versus the Sena over their party symbol and name, both of which have been suspended by the Election Commission. Will the battle for the legacy of Balasaheb Thackeray be defined by the name and symbol picked by either side? Now, Priyanka Chaturvedi, leader in the Shiv Sena Uddhav, joins us now. Now, we reached out to the Eknath Shinde camp. They chose not to appear this evening. But we are also joined by Dr. S.Y. Qureshi, the former Chief Election Commissioner of India. Thank you both very much for being with us. Now, Priyanka, you had submitted a data sheet to the Election Commission and claimed a massive majority within the party units. Now, does the decision of the Election Commission seem to indicate that that interpretation of yours is not correct, which is why, you know, the decision, the symbol has been frozen, as has the name? That would be incorrect to say that they aren't convinced about our membership being a lot more than what the new faction is claiming to be. Just by taking away 40 MLAs and 12 MPs cannot make an entire political party. Tomorrow, if he manages to break away some members of parliament in Maharashtra from the BJP faction, some MLAs from the BJP faction, will he start to claim that he owns the BJP? So this is a question for the Election Commission to answer. In the future, if such position arises where someone claims to be, the party leader on the basis of taking away some elected representatives, I think it would be setting a very wrong precedent. And as far as we are concerned, we had asked for more time. You must understand the chronology behind it. Andheri East bypolls have been declared. Yeah. Andheri East election is going to be contested by Shiv Sena, and the candidate from their side is from the BJP. There is going to be no conflict as far as the symbol is concerned. However, they approached the Election Commission to take a decision on it fast. Now, the Election Commission on Friday evening at 4 p.m. tells us to make our final submissions on Saturday, which is usually not a working day for even the Election Commission, by 4 p.m. that evening. So all we tell them is that if you look at the logic behind it, there is no conflict and there is no reason for you to hurry this decision. Without hearing our side, without allowing us, besides giving them the data sheet and allowing us to give the affidavits, they had a late night meeting, and in that late night meeting, they've decided to freeze the symbol, and not just the symbol, even the party name for the by-election. So do you intend to challenge this now in the Supreme Court? No, I think our party president has made it very clear that we will abide by whatever law procedure has been set before us. They asked us for 3 options as far as the symbol is concerned, and we have given them the 3 options. They asked us for 3 party names, 3 different names that they could, freeze on. We have given them those, but we are very clear that this applies only to this by-election, and after the by-election is done, after we have won the seat convincingly, and we have ensured that BJP gets a resounding defeat, we will get our symbol back. All right. One second, Priyanka. Dr. Qureshi, how does the Election Commission go about evaluating the use of the name Balasaheb Thackeray when it is so emotive for both parts of this party? Is just freezing the name good enough? Because what Priyanka suggests and has stated is that the name Balasaheb Thackeray is very much the proposed name that the Uddhav Thackeray camp has provided to the Election Commission, and it's quite likely, however, that name will also be put forth by the Shinde camp. So how does the Election Commission actually deal with this? You know,
We know the Election Commission does not go by anybody's emotions. So it doesn't matter, it only goes by law. Secondly, Election Commission doesn't jump into the fray on its own suo motu. It always starts a proceeding when one party approaches it. And in this case, whichever party approached, then the notice is given to the other party to give facts. And as Priyanka said that Election Commission seems to be in a hurry, this also is extremely normal. Election Commission wants to decide such cases as quickly as possible, and for Election Commission, Saturday, Sunday doesn't really matter. Always, anytime. Therefore, nothing unusual. No, but there I think also. the point Priyanka was mentioning is that her side was not allowed to actually present its argument. No. Abhi, we haven't heard. They haven't heard the argument. They are going to hear both the sides. They would get the documents from both the sides. They will give a hearing to both the sides, and then we'll take a decision as quickly as possible. Until a decision is taken, which is the party. Also, let it be clear that the Election Commission doesn't decide which is the majority faction. Election Commission will decide which is the party, based of course on the majority. And there the majority means two things. One, MPs, MLAs and the MLCs on one hand, and the other, on the other, the organizational structure. So on both. And now organization is a much larger entity. Therefore, finding a proof that which faction has the majority, it will take some time, which is why till then. Now, if there are some elections happening before the final decision, which is what is happening in this case, then an interim arrangement has to be made. Now, this is an it is a standard practice. You know, the standard practice is that the party name and party symbol is frozen. All right. So that's what's happened. So 1 second, sir. Yeah. Priyanka had a point. Yes, Priyanka. No, Dr. Qureshi, I have just one question. I know you have worked in the Election Commission and of course you would have more knowledge. But my question is very simple. I totally understand that Election Commission doesn't act suo motu. But when the person who is challenging the authority of the political party stands to be suspended in the highest court of law, which is the Supreme Court, and there is a court hearing going on, in spite and despite of that, they become a party to the entire Supreme Court case and make a case of wanting to hear it before the Supreme Court has reached its conclusion. I think this is one of its kind case that we are seeing, sir. And I also feel at this point in time, when the person himself who's challenged the authority of a political party stands to be disqualified, and that is being challenged in the Supreme Court and being heard in the Supreme Court, I would, with all due respect to you, sir, I would beg to differ on this particular point that they have shown an abnormal hurry to conclude this particular idea without hearing the constitutional bench. Mr. Qureshi, very quickly answer as I wrap this up. Mr. Qureshi, yes. Yeah. Priyanka ji, you will remember and you yourself saying you went to the Supreme Court. Supreme Court stayed the operation of the Election Commission that you will not go into this symbols issue. And Election Commission stopped. Later on, the same Supreme Court said, no, go ahead and decide the symbols issue. So this is happening on the instruction of the Supreme Court. Supreme Court had stayed the operations earlier, then they removed the stay and asked the Election Commission to go ahead, and that is what Election Commission is doing. And it will hear both the parties. Look, Priyanka, I know you want to reply on this, but I'm out of time. We're well past our time for this show. We will continue this debate later. I'd like to thank you both very much for being with us. Extremely emotive for both camps of the Shiv Sena. But let's see what the Election Commission finally decides. Some alternative names and symbols have been given. But Priyanka Chaturvedi, they're pointing out that it's just for these forthcoming elections. And in the future, they would very much want their original name and symbol back. Out of time. Good night.